Wow, very There's nice. so many things, you know, palak paneer. And you Aloo tried keema, and aloo you- keema. Aloo keema, wah, 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 wah. These are the desi khana. Don't take the names, I'm already hungry. Pachiga pie. Pachiga pie. Bajje ke pie. Hi, mere abba. गोरा तो पजे तो पाए भी खा लेना है जी बस सर्किट जी बस my you're taking the name and my intensity is coming up मेरी अक्ते बड़ी है जा रही है not take I'm hungry actually don't Yeah, I'm hungry too. Let's go out after the show and get some God, chicken roll paratha. chicken roll पराठा नहीं जावेद की नियारी चिंकी जी मुझे इतने कुछ जावेद याद की आ नियारी गया नहीं नहीं छोड़ो लेकिन yeah you don't know this is this our Billo is enemy of food Enemy of food. She is a very foodie person. Yeah. No, I'm not. खाने की She is दुश्मन loving all the kind of food. Oh, really? Yeah. she even tried to eat this glass other day we shared the glass she was eating our glasses the other day But they're very tiny, so they're not eating, I don't think. you don't know they look tiny but they are खाने का कुआं अंदर पूरा you don't know yeah and she loves to go to these shadis you know with the weddings Oh yeah, that's one of my favorite things to do. और she gets very good food over there that's why शादी का इनविटेशन ना दिया है तो फिर भी मेरी बुराइयां कौन ले ले मैं बता रहा हूँ गोरे का तुम्हारी हिसाब किताब तुम क्या करती रहती है हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम सलाम जी कौन सा और कहाँ से This is Hassan from Karachi. हसन गुड टू हियर योर वॉइस क्या कहना चाहेंगे शो कैसा लग रहा है आपका Show is going good. Actually, I want to talk to with Todd. Can I speak to him? Miss Todd Mr. Todd Mr. Todd yes over to you he wants to speak to you Hi Hassan. Hi Hassan. Yeah, hi Todd. How are you? Fine sir. Kya le theek thaak? Oh yeah, TikTok, very good. So actually, I want to thank you for importing the software image of Pakistan all over the world. I need to know. So, do you have any plans for foreign singers to come in Pakistan and play here in Karachi or Lahore, Islamabad? Well, Sonic Peacemakers is going to be doing some recording with more Western artists and Pakistani artists, and we want that to lead to more events and shows here in Pakistan. Of course, right now at this time we haven't solidified the plans for any of the shows with the American or British singers or Western singers to come to Pakistan. We're working on the recording in LA, in Dubai. We'll record some things here. But as far as doing shows and events, we really hope that in the next year or two we can begin doing this. You know, Sonic Peacemakers is it's a movement. It's not just a few events or one or two albums or CDs. We want this to be an ongoing thing that grows and starts with America and Pakistan, because you know the musicians can come together and they can show the people of each country, because we hear 2% of the truth 100% of the time about Pakistan in America, and they don't hear and see the so many wonderful people and the wonderful things they do. So through this music project we can do that. So it's an ongoing thing. Inshallah, we'll have a lot of concerts and events here in Pakistan one day. wow I hope Hassan It means you have got the plans in the pipeline. Ji sir, no doubt we have a plan. Okay, because as far as I know, there are lots of people out there in US and London, lots of singers, lots of artists. They want to come in Pakistan, but because of the political situation out here in Pakistan, they are kind of reluctant, you know. It's true that there are security concerns, but we're looking at it like this issue will eventually get better over time, and hopefully some of what we're doing with our music can be helpful, because it's not just about music, it's about bringing people together, it's about doing humanitarian relief work, it's about respecting Islam, it's about all these things. Alright जी, I hope Hassan आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो, और जैसे कि टॉड ने बताया कि ये चाहते कि अमेरिकन और पाकिस्तानी वहाँ एक दूसरे के करीब आए, और जिसकी यही शायद एक वजह है कि ये पाकिस्तान में मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर, और इस वक्त टाइम हुआ चाहता है फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक. टॉड इज हियर विद अस, नसीम इज हियर विद अस, और भी गाने सुनेंगे टॉड से, और आज बंगला शंगला भी करेंगे. विल डू बंगला इज वेल. I'm not good at that. I'll watch you guys. You're not here to watch us, you'll do it with us. I'm terrible at dancing. Really? I can't do it. We'll do the ballet. Ballet, ballet, ballet. You thought ballet, 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 ballet. All right, G, we're going for a break. Break के बाद वापस आते हैं. Stay tuned. As we wake up to the morning light,
Memory winds its way from the hallway to my mind. It takes me away back to the good old days when our little house was filled up with the sound of little feet upon the floor, down the hall and opening up our door, crawling across the sheets, snuggling up to you and me, little angels with those little feet, using our bed for a trampoline. Now they're all grown up and moved away. Oh, how I miss those little feet of yesterday. I like it, I wrote it for my son. Really? But he's got big feet now. Graduate. Now those precious times have come and gone, but I remember their little wiggle, and their little giggle still echoes on. So if you happen to see a little tear, it's only 'cause I wish I could still hear the happy sound of little feet scurrying across the floor, down the hall and opening up our door, crawling across the sheets, snuggling up to you and me, little angels with those little feet, a little good morning kiss on the cheek. Now they're all grown up and moved away. Oh, how I miss those little feet of yesterday. So if I hold you extra tight and love you more every day and night, I'm thanking you, my dear, for our children and for all the years. And when our kids have their own little ones, they'll know how much they mean to us. They'll visit every now and then, and we'll hear those little feet again. They'll come and visit now and then, and we'll hear those little feet upon the floor, down the hall and opening up our door, crawling across the sheets, snuggling up to you and me, little angels with those little feet, using our bed for a trampoline. Now they're all grown up and moved away. Oh, how I miss those little feet of yesterday. Wonderful. ये गाना टॉड ने लिखा था अपने बेटे के लिए, जो कि आज जैसे कि बताया था कि वो इस साल तो ग्रेजुएट हो रहा है, 21 साल का हो चुका है, और व्हाट एन अमेजिंग वर्डिंग इन्होंने सुनाई हमें, और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा. सो आई थॉट वी आर मेकिंग यू टू sing more songs and more songs, because obviously you're a musician, and musicians, and you're so tell us about how which artists you've performed yet, of Pakistani artists you've performed. I've seen the Atif Aslam clip, Yeah, I performed with Ibrahim Al-Haq, okay, Javad Ahmed, Nice. Wow. Kya baat, Nouri. kya baat hai. I've performed with Ali Azmat. Amazing. Yeah, I love all of them, but Ali Azmat is amazing, and has been for a long time. And I've also had the honor of playing with musicians in Sindh who were folk affected, musicians, folk. Yes, folk musicians who were affected by the earthquake. Wow. I'm sorry, affected by the floods, and musicians affected by the earthquake in Kashmir. And so a lot of these folk musicians and not so famous, or some of them are well known, but not as famous as the rock stars, but they have been like the real inspiration for me, because they've gone through these terrible disasters, and yet they're still, out there singing and performing and doing their best, and they're quite inspiring. And the music they make is just out of this world. It takes me to another plane. Wow. Believe it or not, in our show we play most of the time the folk music, and people love it like anything, and I dance like a Crazy. crazy manj pants.
आहो इतनी मंच पागल होगी, ठीक My है। friend अच्छा, Lenny. इसके साथ ये भी हम सोच रहे थे कि नसीम, राइट, नसीम जो है वो कुछ उनके साथ गा नहीं रहे हैं कुछ। नसीम इज जस्ट नसीम इनके साथ एक वर्कर हैं, ठीक है, जो उनकी ह्यूमैनिटेरियन जो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि आप भी सिंग करते हैं, आई थिंक सो। आज थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, ओह, इसलिए तबीयत आज ही आपने खराब करनी थी। Actually, Naseem is a young man who represents the best of Pakistan. He's somebody who took this job and took this humanitarian work for what it can do for the country, and he has a heart to help people and to make this world a more just and better place. And it wasn't about salary, it wasn't about, you know, any of the thing that he could get for himself, except that he has this heart to serve humanity. And I've met a lot of young people in Pakistan who also want to do something for this country and want to make it a better place. And so I'm their supporters. I'm not the hero. It's someone like him who's the real hero. And what I can do is try to assist him. बिल्कुल। और नसीब जैसे कि बताया कि देखें ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले स्पेशली पाकिस्तान में जो है वो कितनी जानें जो हैं वो ऐसे ज़ाया हो जाती हैं, इतने लड़ाई झगड़े, इतना फसाद हुआ, ठीक है, पर आप ये देखें कि कितना बड़ी बात है कि देयर आर स्टिल वर्किंग टू सेव यू नो ह्यूमैनिटी और इस तरह के डिजास्टर्स में पाकिस्तान की। नसीम ये बताएं कि जब आप टॉड को लेके जाते हैं जगहों पे जो डिजास्टर जहाँ पर हुआ होता है, ठीक है, तो लोग उनको देखते होंगे, ठीक है, तरह तरह के सवाल करते होंगे, कुछ तो देख के ये कहते होंगे भाई ये क्या आ गया है, ठीक है, कोई अमेरिकन CIA ना आ गई हो कोई साहब, ऐसा ना हो। अच्छा, ये हाँ, ये बात आपने कही, मैं कहना चाह रहा था, आप उसी पॉइंट पे आ गए कि कुछ ऐसे होते हैं NGO से या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फॉरेनर्स आते हैं इधर मतलब ह्यूमैनिटेरियन काम करने के लिए, वो जाते हैं सिक्योरिटी के साथ, लेकिन हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है। No, we don't spend anything on security. So Todd और हम बगैर सिक्योरिटी क्योंकि ये अमेरिकन हमें पता है, इनको हमारे लिए तो पुलिस 1-5 कॉल करना है, इनके लिए तो भाई पूरी फौज आ जाएगी। सिक्योरिटी हम सब सवात गए हैं, चौसदा गए हैं, पूरे KPK, सिंध, कश्मीर, हम एक Spend your money on medicines and doctors, and you come there with love and compassion, and that is your security. People will protect you with their lives, and you know. If you go, that's why I was saying that I hardly see the Americans and any international foreigner on the streets. You know, these days, if they are on the streets, they are with the hell lot of security cars. फिर ये कि अगर लोगों में आप सिक्योरिटी के साथ जाओ और आपके साथ लोग हों, तो लोग भी बोलते हैं कि यार कोई फर्क नहीं, आप लोगों में जाओ, घुल मिल जाओ। जैसे हम सिंध में थे तो हम मतलब कैंप्स, मेडिकल कैंप्स हो रहे थे, they make हमें वो फील करवाते हैं हम कोई पता नहीं खा जाएंगे क्या है भाई, हैं कोई हमने कोई तो हम भी आपकी तरह इनकी तरह जो है फॉरेनर्स की तरह हम भी, और हम तो ये चाहते हैं, हम वी आर वेरी, आपको पता है कि जैसा पता है, यू मस्ट हैव सीन हॉस्पिटैलिटी in Pakistan, how unbelievable hospitality, unbelievably wonderful hospitality. और किस तरह हम अपनी मेहमान नवाजी में हमसे आगे पीछे कोई भी नहीं है। अगर आप जाएं खास तौर पर जिन एरियाज का बता रहे हैं वहां पर, तो वो अपनी घर पूरा दे देते हैं, अपने बिस्तर पे नहीं सोएंगे, पर आपको मेहमान के लिए जो करेंगे। आपको कैसा लगा वहां पर प्ले करके, कैसी फीलिंग्स आई? खिपड़ो हम गए थे, खिपड़ो एक इंटीरियर सिंध में एरिया है, तो उसमें हम गए थे, तो मैं तो पहले गया था, उसके बाद टॉड वगैरह ने आना था उधर, तो मेडिकल कैंप्स और तो बच्चे ज्यादा थे, तो ये था कि हम लोग गए और उनमें घुल मिल जाना होता है, पहले ही उन अफेक्टेड होते हैं डिजास्टर से, तो यू नो उनको करना पड़ता है कि किसी को यू नो हक कर लो और यू नो बच्चों के साथ, फिर टॉड कम्स इन विद दिस गिटार और ऑल दैट, हम सर्कल बना देते हैं बच्चों को गैदर करके, और पाकिस्तान के फ्लैग्स, उस वीडियोस हमारे पास हैं YouTube पे, तो पाकिस्तान के फ्लैग्स लेके देन वी स्टार्ट सिंगिंग और कोई क्लैपिंग कर रहा होता है, तो इस तरह से नो फिर वो एक वक्त होता है कि वो भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि उनके साथ हुआ क्या था, तो काफी अच्छा लगता है गाते हुए, हालांकि आवाज तो मेरी बहुत बुरी है, लोग भाग जाते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं खाने के लिए। अच्छा, टॉड ने आपको क्या बताया कि जब भी अमेरिका वापस जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं, टी-शर्ट भी पहनी है, तो वहाँ तो आपको पता है बड़ा नेगेटिव कंसेप्ट है, जो इंटरनेशनल मीडिया बड़ा एक नेगेटिव परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में देता है कि जी हम भी तो पहले कहा जाए टेररिस्ट, तो फलाना, तो ये तो वो, तो ये कैसे उनके साथ डील करते हैं, उन्हें बताते हैं जब पाकिस्तान के बारे में, तो लोग वहाँ तो उनको बड़ा वो इनको इंप्रेशन बड़ा गलत मिलता होगा, कोई इनको बुरा भला भी कहता होगा कि यार आप क्या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल, जैसे पहले उन्होंने बताया ना कि मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट और वो एक जो इमेज है ना वो उधर बिल्डअप हो चुकी, मीडिया जिस तरह प्रेजेंट करता है उस तरह नहीं होता, तो बेसिकली जो सोनिक पीस मेकर्स की उन्होंने बात की, जो प्रोजेक्ट है म्यूजिक का, तो हम मतलब एज ए म्यूजिशियन ये समझते हैं, हम ये समझते हैं, या पाकिस्तानी म्यूजिशियन समझते हैं कि म्यूजिक ऐसी एक चीज़ है जिसके थ्रू यू नो आप एक पॉजिटिव इमेज पे पेश कर सकते हैं पाकिस्तान की,
तो ये जब व्हेन ही गोज बैक टू द स्टेट्स और फंड रेजिंग के लिए, तो फिर ये उनको यही बताते हैं कि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसा कुछ होता या कुछ बहुत मसले मसाइल होते तो मैं वहाँ ना रहता और मैं इतना अर्सा जिंदा रहूं, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। तो यही